तो आज का टॉपिक है फिजिकल एप्लीकेशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन। इसमें टॉपिक है पार्टिकल इन ए बॉक्स। चलो देखते हैं क्या होता है। लेट ए सिंगल पार्टिकल of mass m confined in a rectangular box of length lx, ly and lz. Inside the box, the potential Vxyz is equal to 0, but outside the box it rises very large value. Now the Schrodinger equation for this case, del square psi plus 2m over h cross square e psi is equal to 0, since v is equal to 0, or del 2 psi over del x square plus del 2 psi over del y square plus del 2 psi over del z square plus 2m over h cross square e psi is equal to 0. This is partial differential equation in three independent variables and may be solved by method of separation. So we can write the solution of above equation: psi x y z is equal to x function of x, y function of y, z function of z, where x x, y y and z z is function of x, y and z respectively alone. Now इसको इक्वेशन नंबर 1 देंगे,
ये इक्वेशन नंबर 2. Now substituting value of psi from equation 2 and dividing by x, y and z we get. तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में चलते हैं आगे. वन अपॉन एक्स डेल टू ओवर डेल एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वन अपॉन वाई डेल टू वाई ओवर डेल वाई स्क्वायर प्लस वन अपॉन जेड डेल टू जेड ओवर डेल जेड स्क्वायर प्लस टू ओवर एच क्रॉस स्क्वायर ई इज इक्वल टू 0. इक्वेशन नंबर 3. नाउ अबव इक्वेशन में बी रिटन एज वन अपॉन एक्स डेल टू एक्स ओवर डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन वाई डेल टू वाई ओवर डेल वाई स्क्वायर माइनस वन अपॉन जेड डेल टू जेड ओवर डेल जेड स्क्वायर माइनस टू ओवर एच क्रॉस स्क्वायर ई. इक्वेशन नंबर 4. In above equation, left hand side is a function of x alone, while RHS is function of y and z, or independent of x variable. So we can use a constant which is equal to both sides of equation 4. 1 upon x del 2x over del x square is equal to kx. Equation number 5. Minus 1 upon y del 2y over del y square minus 1 upon z del 2z over del z square minus 2m over h cross square e is equal to kx. Let equation number 6. Equation 6 can be written as 1 upon y del 2y over del y square is equal to minus 1 upon z del 2z over del z square minus 2m over h cross square e minus kx. इक्वेशन नंबर 7. तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलते हैं आगे. In equation 7, LHS is a function of y variable, while RHS is function of z. So
we may use another constant which is equal to both sides. Let ky, so 1 upon y del 2y over del y square is equal to ky. Equation number 8, minus 1 upon z del 2z over del z square minus 2 over h cut square e minus kx is equal to ky. Equation number 9. Now equation 9 can be written as 1 upon z del 2z over del z square is equal to minus kx minus ky minus 2 over h cut square e constant kz से, so we have kx plus ky plus kz is equal to minus 2 over h cut square e 1 upon z del 2z over del z square is equal to k z. For convenience, let us substitute kx is equal to minus 2 over h cut square ex, ky is equal to minus 2 over h cut square ey, and kz is equal to minus 2 over h cut square ez. इक्वेशन नंबर 10. तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, फिर चलते हैं आगे. Now from equation 5 we have del 2x over del x square plus 2 over h cut square ex, x is equal to 0. Question number 11. Similarly, for y and z function, del 2y over del y square plus 2 over h cut square ey, y is equal to 0, del 2z over del z square plus 2 over h cut square ez, z is equal to 0. Equation 12. Equation 13. Now the general solution for equation 11 will be sine function. So x, function of x is equal to a sine bx plus c. Equation 14. We know that mod of x square
represent the probability of finding the particle at any point within the box. Outside the box, mod of x square will be 0. So mod of x square is equal to 0 when x is equal to 0 and x is equal to lx, the length of box. चूँकि बॉक्स की लेंथ पर पोटेंशियल इनफाइनाइट है, सो वहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग 0 होगी। और एक्स इज इक्वल टू 0 when x is equal to 0 and x is equal to lx. Using this boundary condition, equation 14 gives sin c is equal to 0, sin bx plus c is equal to 0। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। which yields c is equal to 0, sin bx is equal to blx is equal to 0। That implies blx is equal to nx pi, where nx is a positive number, then b is equal to nx pi over lx. Substituting values of b and c in equation 14, we get x is equal to a sin nx pi x over lx. For simplicity, we may assume a be a real number, then using condition for calculating the value of a, we use the condition integration 0 to lx mod of x square dx is equal to 1. We have integration 0 to lx a sin nx pi x over lx का स्क्वायर dx इज इक्वल टू 1। ए स्क्वायर बाहर आ जाएगा, 0 टू lx साइन स्क्वायर एन एक्स पाई एक्स ओवर lx dx इज इक्वल टू 1। ए स्क्वायर अपॉन 2
0 to Lx or 0 to Lx 1 minus cos 2 pi nx x over Lx dx। साइन स्क्वायर एक्स को कोस 2x के रूप में लिखा है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलते हैं। आफ्टर इंटीग्रेशन we get a square upon 2 dot lx is equal to 1, then a is equal to under the root 2 upon lx, putting this value of a, we get x is equal to 2 upon lx under the root sin nx pi x over lx, finding its second derivative, we have del 2x over del x square is equal to minus nx pi over lx का स्क्वायर x function of x, equation 15। Now from equation 11 and 15 we get minus nx pi over lx का स्क्वायर x function of x plus 2m over h का स्क्वायर ex function x is equal to 0, और ex is equal to 1 upon 2m nx pi h cut over lx का होल स्क्वायर इज इक्वल टू nx का स्क्वायर h स्क्वायर ओवर 8m lx का स्क्वायर। सिंस h cut is equal to h upon 2 pi, similarly y is equal to 2 ly root sin ny pi y over ly, and z function of z is equal to 2 lz under the root sin nz pi z over lz, where ny is equal to 1 2 3 and so on, and nz is equal to 1 2 3 and so on, and the energies Ey is equal to ny square h square over 8m ly square, Ez is equal to nz square h square
और ये टर्म जेड स्क्वायर। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 10 we have E is equal to EX plus EY plus EZ. Putting the values of EX, EY and EZ, we get E is equal to एच स्क्वायर अपॉन ए टर्म कॉमन आ जाएगा और शेष रहेगा एन एक्स स्क्वायर और एल एक्स स्क्वायर प्लस एन वाई स्क्वायर और एल वाई स्क्वायर प्लस एन जेड स्क्वायर और एल जेड स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 16. Now nx, ny and z denote any set of three positive numbers. The complete wave function psi nx, ny and z has the form for various values of quantum numbers nx, ny and nz. So then we get psi nx, ny and z is equal to x function of x, y function of y, z function of z is equal to 2 under the root 2 over lx, ly, lz sin nx pi x over lx sin ny pi y over ly sin nz pi z over lz. Equation number 17. Now the graph for three normalized wave function x for a particle,